Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Zishan Ali again as a course instructor of your strategic marketing management for MPhil and MBA. Today we are going to start with the second chapter of your marketing strategy book from O.C. Farrell. I uploaded your last lectures slides as well as the book material, so you can download from your Google Classroom. Okay, starting from the first topic, that is the strategic planning process. Let me please explain the planning process, what actual the word stands for. Okay, the process is just like a step-by-step procedure. The output of first step will be the input of second, and second's output will be the input for the third. This is the same process that the computer or laptop or any CPU used. If you put the instruction from your keyboard and that keyboard processes that instruction, then display comes in your LCD. Such type of whole procedure is called process. So this is the combination of steps and interlinked steps. So output of first will be the input of another step. Now what the planning is, as we already studied that the management course that we have the 4 pillars: planning, organizing, controlling and monitoring, and we observe that the planning process is basically to make some plans and objectives, deciding some rules and procedures. We are going to just design the blueprint for your strategy is basically the planning. So every decision in the life begins with the planning. If you need to purchase some shirt or pant or shoes or whatsoever from your daily routine like grocery items, you need to first plan for that. You need to analyze the steps you follow, you need to analyze the distance, you need to know the amount you are going to spend. So these are the planning steps that you follow in your purchasing of daily routine lives. Okay, we already studied that we have 3 levels like corporate level, strategic business unit level and the functional level. The middle is the strategic business unit level, which approaches towards the functional level. The corporate level decides what SBU level will do, and SBU level operationalize those decisions at functional level. So, and we already studied that the combination of environmental scanning, internal and external analysis is called the situation analysis. So situation analysis is the first step that we do in planning process, because it includes all the analysis from inside the company and outside the company, and you better understand what decisions or what planning you need to know or you need to decide about your next phase or the organization's policy or organization decisions. So this is the in-depth analysis that is called the situation analysis, and then we go and move towards for establishing its mission, objectives, goals of the company, strategy of the company, and several functional plans after those situation analysis consequences. Okay, what the marketing plan is, this is the second topic I am going to discuss. Marketing plan is basically a written document, just a plan by the marketeer for the company that provides the roadmap or a blueprint or a sketch or just like a direction or outline of the organization marketing activities, like which target market should be adopted, which segment is adopted, what will be the competitive advantage, how you can implement those strategies that you already or you need to know or you are going to plan, what will be the evaluation processes and control of those activities. So this is the plan that serves number of purposes that you unimagine. Your this written document will is the future prediction for your marketing activities, that how organization will achieve its goals. So some points I am discussing here, like majorly I discussed about activities of marketing, like goals, like objectives, like mission, like vision. So these are the basic characteristics or traits that we decide in the marketing plan, that how we can design
such goals, such objectives, such vision, such mission by analyzing the situation analysis first. Then we move towards the marketing plan. A marketing plan is definitely a written document that provides the blueprint of your marketing activities. So this is basically a car. A marketing plan is just like a car or a roadmap. If you want to go somewhere, this is just like a plan. You visit that destination. If you are unable to design the best marketing plan, that is just like a driving car without knowing your destination. So marketing plan has such importance in your decision making and the strategic planning. So this whole criteria or whole structure on the basis of this marketing plan will work. Now moving towards the next topic, that is basically the whole infrastructure. First of all, we understand this is the three levels I already discussed in initial lectures of strategic marketing management. That is corporate social analysis. This whole first step is the corporate level, and we move towards the second phase, that is the business unit level, and we will first analyze the corporate situation analysis. It means internal and external, and we design the corporate mission, goals and objectives. After deciding this step, we will move towards the business unit situation analysis, and we again on the basis of business unit, like if we take an example of a PepsiCo or Pepsi company, then Pepsi company as overall as a whole will get some situation analysis and design in the past, like 1980s, like 1960s, when it is established, it analyzed some situation analysis, and they design their mission, goals and objectives on the basis of those analysis. When corporate decides their corporate situation analysis, and now they are going to develop the business unit situation analysis, then they are able to move towards designing each business unit. Like if we talk about the beverages, the Pepsi, the 7-Up is the business unit. The confectionery, then we have the Lay's, chips, whatsoever is another SBU. So they decide separately for beverages and confectionery, and they took the business unit situation analysis for both SBUs, and they decide the business unit mission, goals and objectives on the basis of those business unit situation analysis. So ultimately we first move from top to bottom, that is corporate situation analysis. You will design your corporate strategy, corporate mission, corporate goals and objectives, and after following or analyzing or understanding your corporate scenario or corporate working or corporate strategies, you will move towards the business unit situation analysis, because those characteristics of your corporation will inherited in your business unit situation analysis. So business unit mission, goals and objectives will be decided in the second phase, and that is business unit situation analysis. Business unit strategy is the third phase, in which we divide this is basically the functional part. We decide in the first chapter that we have three levels: corporate level, I already talked about, and the business unit situation analysis, second one, and the third is the functional area, where we implement those strategies and implement those functions and implement those strategies that we develop in corporate and as well as in business unit. So this is the working, this is the implementation phase. We float those strategies, or we activate those strategies in marketing, in production, in finance, in HR, in other functional goals like operations or whatsoever. Marketing goals and objectives, if we talk about the marketing plans, then the first phase is to decide the marketing goals and objectives, and we develop the strategy on the basis of those goals and objectives, and then we implement, then we evaluate and control, and same process will move towards all functional areas like HR, like finance, like production, like operation. Okay, one thing to observe in this diagram is these arrows is connected downward. Okay, we can understand the flow of the information from business unit strategy to each function like marketing, production, finance, HR, or operation, or other functional goals or service area. And these two-way arrows in each function is also make some importance in this diagram, that the output of first will be the input of second, and the output of second will be the input of third, and the output of third step will be the input for the fourth one.
So this whole function or whole working process will work in two-way direction, from top to bottom, from left to right or right to left. Okay, this is not the one way flow of information, this is a two-way flow of information, whereas this information is floated or transported or just disseminated only once. If you are going to disseminate or implement the business unit strategy, then you have to be careful that you are going to deliver information or corporate situation analysis or business unit situation analysis or the decisions you are going to make on the basis of these three one way communication. But if you need to change something between these function areas, you can amend it anytime. In case if your HR is selected wrong, you can change it, or you can observe that this HR may be the problem for the financial goal, or it may be the problem for the because of production goal, because of marketing goal. So it can be changed at any time. तो अगर मैं ये बात करूँ अभी इसलिए बता रहा हूँ ये इन उर्दू, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो. देखें, कॉर्पोरेट सिचुएशन एनालिसिस और द बिजनेस यूनिट सिचुएशन एनालिसिस, ये दो वो लेवल्स हैं जिसके ऊपर पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी वर्क करती है. कॉर्पोरेट सिचुएशन एनालिसिस आपकी ओवरऑल कॉर्पोरेट के सिचुएशन को एनालाइज इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बता चुका हूँ. उसकी बेसिस के ऊपर कॉर्पोरेट मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं. और जब वो बन जाता है, लाइक मैंने पेप्सी को की एग्जांपल दी कि वी हैव बेवरेजेस एंड वी हैव कन्फेक्शनरी, देन वी मूव टूवर्ड्स द बिजनेस यूनिट सिचुएशन एनालिसिस. फिर हम हर एसबीयू का, हर बिजनेस यूनिट का सेपरेट मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे. और उसके डिसाइड करने के बाद वी विल मूव द बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी टू ईच फंक्शनल एरिया. लाइक वी टेक एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के पहले उस एसबीयू के हिसाब से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे. लाइक बेवरेजेस की एग्जांपल लें तो पेप्सी को अपनी बेवरेजेस की जो मार्केटिंग करेगा वो उसके गोल सेपरेट होंगे, और लेज़ की जो मार्केटिंग करेगा, मैं दो ये एसबीयूज इसलिए बार बार ले रहा हूँ बिकॉज ये दो ही वर्किंग में है पेप्सी को में और आपको नोन है, तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे फॉर यू पीपल. सो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स for each SBU will be separately or separately planned, separately decided, separately implemented. So marketing goals objective के बाद production goals and objective, financial goal and objective, HR goal and objective, और other functional कोई भी हो like operation और any, if you are dealing with the service industry, तो आपके service industry के functional goal होंगे वो different होंगे. जो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि ये वन वे और वन फ्लो है. बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी वंस अगर आप डिलीवर कर देते हैं अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को, तो इसका रिवर्सल चेंज नहीं है. यानी कि अगर आपने यहाँ कोई गलती कर दी है कॉर्पोरेट सिचुएशन एनालिसिस में और वो फ्लोट हो गई है, आगे चली गई है बिजनेस यूनिट में, और अल्टीमेटली आप उसको तमाम फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो आपका पूरा जो बिज़नेस का पोर्टफोलियो है वो ग्रोथ में नहीं जा सकेगा. सो यू नीड टू टेक सम टाइम टू इम्प्लीमेंट दो स्ट्रैटेजीज. You need some long time period to understand the corporate situation analysis and business unit situation analysis. So ये जो टू वे एरोज़ हैं ये बता सकते हैं या बता रहे हैं कि आप आपस के जो कम्युनिकेशन है आपके फंक्शंस की, वो तो इंटरचेंज हो सकती है. यानी कि फॉर एग्जांपल आपके अगर फाइनेंशियल गोल्स में कोई डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आप एचआर हायर नहीं कर सकते, तो हो सकता है आपको कुछ प्रोडक्शन बढ़ानी पड़े. अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर आप प्रोडक्शन स्ट्रेटजी ऐसी करें या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करके सेलिंग को बढ़ा सकें, अट्रैक्ट कर सकें, ताकि आपका फाइनेंस डेवलप हो और आप मज़ीद एचआर रख सकें. सो दीज एरियाज कैन बी कम्युनिकेटेड बोथ हैंड्स. इसकी चेंजिंग कभी भी हो सकती है पॉसिबल, बट ये वाला जो वर्टिकल एस्पेक्ट है ये अगर आप एक दफ़ा गलत बना चुके हैं, यानी अगर आपने सिचुएशन एनालिसिस को किसी और तरह लिया, अपने कंपैटिटर को किसी और तरह लिया है, कंज्यूमर की नीड को किसी और तरह लिया है, तो आपके ये जो मार्केटिंग से लेके अदर फंक्शन गोल्स तक है ये तमाम ऑल इन वेन रहेंगे. ठीक है जी, मेक दैट थिंग श्योर कि अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई है, दैन इट्स मच मोर easy for you people to understand what strategic planning process is. If you are unable to understand it, then please share with me. If you need to know anything from this diagram, I am available for you people. But this is most important thing is कि you must know the process or the flow of information. Okay. अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ. अब हमने ये सारी डायग्राम का प्रोसेस तो डिस्कस कर लिया है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि द नेक्स्ट स्टेप इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन विजन. ओके जी,
starting from the mission statement, that is basically okay. This mission statement is the basic understanding of for you people. आप पहले बहुत दफ़ा ये मिशन स्टेटमेंट की पढ़ चुके होंगे. what is the basic cause of the mission statement, in which we analyze the answer for what business are we in, that we are dealing in which business we are, which product should be made, which product should be manufactured, which business we are going to establish or we are working in. बहुत सारे बिजनेसमैन से पूछा जाता है आपने ये बिज़नेस क्यों खोला, तो उनका फर्स्ट आंसर होता है दैट वी टू अर्न मनी. येस, द अर्निंग इज़ द फर्स्ट स्टेप. Definitely you will earn. Definitely if you sell your product or service, you will earn something, you will get in return. But basic purpose of your business is to develop some value for your customers or consumer. You are going to deliver the value via your product or via your service. अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर वो वैल्यू डिलीवर नहीं है और आप ये नहीं समझ रहे कि हमने ये बिज़नेस खोलने की क्या वजह थी, हम क्या ऐसी चीज़ है जो अपने कस्टमर और कंज्यूमर को दे रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके पास आए, देन यू आर अनएबल टू डिसाइड द मिशन स्टेटमेंट. सो हेयर द फर्स्ट स्टेप इज़ आंसर टू मिशन स्टेटमेंट, व्हाट बिजनेस वी आर इन. हम करंटली किस बिज़नेस में वर्किंग करना चाह रहे हैं. अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो आपने मिशन स्टेटमेंट मीन्स क्लियर कर ली. और जो विजन स्टेटमेंट की डिस्कशन है, दैट व्हाट डू वी वांट टू बिकम, ये करंट सिचुएशन को एलैबोरेट करती है मिशन स्टेटमेंट. या इट मीन्स मिशन स्टेटमेंट शुड बी रिटन फॉर द करंट सिचुएशन. You are going to decide in which business we are in currently, and if you are perceiving some future or you are deciding for future perspective, then you will going to you need to design some vision statement, that what do we want to become in future. It depends on future. आप vision statement बनाते हैं future perspective को रखते हुए. सो मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, अंडरस्टैंडेबल हो, और ये डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है अपने कंज्यूमर को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टेक होल्डर्स को. इसको बताना पड़ता है आपके कल्चर का क्या सिचुएशन है, आप किस तरह अपने बिजनेस के कल्चर को डेवलप करते हैं. सो इट एक्सप्लेन्स द ऑर्गेनाइजेशंस रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस. मिशन स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. एंड वी टॉक अबाउट विजन स्टेटमेंट, दैट व्हाट डू वी वांट टू बिकम इज़ द आंसर फॉर द विजन स्टेटमेंट. इट्स अ लॉन्ग टर्म. विजन स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म होती है, 10-15 साल की प्लानिंग पे बनाई जाती है. और इस विजन स्टेटमेंट जो है वो आपको बेस्ट एलेबोरेट करती है कि फ्यूचर में आप किस तरह मूव करना चाहते हैं, आपको डायरेक्शन देती है. इफ़ नाइकी की एग्जांपल लें तो नाइकी डेवलप द शूज़ फॉर एथलीट्स. ये वो कहता है जी हम ऐसे शूज़ बनाते हैं जो एथलीट्स है. अब एथलीट्स मीन्स कि वो हम ये बात नहीं कर रहे एथलीट मीन्स जो भागने वाले हों या जो रनिंग. एथलीट मीन्स अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में एथलीट का ऑब्जर्व करें या फाइंड आउट करें, इट मीन्स द एवरी पर्सन हु इज़ हेल्दी, हु कैन वॉक, हु कैन स्विम, हु कैन जंप इज़ द एथलीट. सो अ डिसेबल पर्सन अनफॉर्चुनेटली और डिसहार्टेडली इज़ नॉट एन एथलीट. वो एथलीट कंसीडर नहीं होता, इसलिए उसको डिसेबल कहते हैं. सो द एथलीट मीन्स के नाइकी ये बता रहा है अपनी मिशन स्टेटमेंट में, दिस इज़ नॉट विजन स्टेटमेंट, in which business we are in is the Nike mission statement is that we develop or manufacture the shoes for each and every athlete. And I define the meaning of athlete in dictionary meaning, that athlete is the person who can run, who can walk. Every person ही बेशक वो बच्चा है, बेशक वो बड़ा है, बेशक वो जेंडर मेल फीमेल किसी में भी एग्जिस्ट करता है. So athlete means a healthy person who can walk or who can move by his or her own will. सो विजन स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव होती है. और अगर मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल इसकी गूगल की यहाँ कोट कर देता हूँ, बिकॉज यू पीपल नाउ डीलिंग गूगल फॉर योर आर्टिकल्स एंड असाइनमेंट. सो गूगल मिशन इज़ टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन. मैं मिशन स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, आई रिपीट, गूगल्स मिशन इज़ टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, दुनिया की इंफॉर्मेशन, and make it universally accessible and useful. It means in which business we are in. गूगल ये बताता है कि हम किस बिज़नेस में हैं. हम इस बिज़नेस में हैं जो ऑर्गेनाइज करती है दुनिया की इंफॉर्मेशन को और उसको यूनिवर्सली एक्सेसिबल और यूज़फुल बनाती है. हम इस कारोबार में हैं अभी करंटली. और अगर हम गूगल के विजन की बात करें तो गूगल्स विजन इज़ नेवर सेटल फॉर द बेस्ट, नेवर सेटल फॉर द बेस्ट, ना ख़त्म होने वाला. यानी कि इसकी कोई बेस्टेस्ट सिचुएशन हम नहीं बता सकते. ऑर्गेनाइजेशन विजन जो होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. और इतना ओपन गूगल ने
अपना विजन रखा है कि वो कभी भी वो कहते हैं हम बेस्ट की तलाश नहीं कर सकते, हम बेस्ट पे नहीं बैठ सकते कि बस हमने अब बेस्ट कर लिया है, नाउ वी completed. So our vision is broad, where organization headed is the answer for the vision, or where that organization wants to go is the answer for vision statement. I hope I make so much effort to clarify it, and you better understand what mission statement and vision statement. Make one thing clear, that your mission vision statement is the key area, is the key point to define your business. If your mission statement is vague यानी confusing है, तो आपके कस्टमर और आपके एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होगा कि हमारी कंपनी की एग्जिस्टेंस की क्या वजह है. जैसे मैंने आपको नाइकी और गूगल की एग्जांपल दी, देयर एम्प्लॉयज़ नो दैट कि हमारे गूगल का जो मिशन है वो ऑर्गेनाइज दुनिया की बेस्ट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और यूनिवर्सली एक्सेसिबल करना है. सो ये चीज़ें जो हैं, दो इट्स एन थ्योरी मेड थिंग्स, बट इट्स नेसेसरी फॉर यू पीपल. इवन कि आपने कई बिजनेस शॉप्स के ऊपर या होलसेलर डिपार्टमेंट्स के ऊपर उनके मिशन विजन स्टेटमेंट को लटका हुआ देखा होगा, हैंगिंग पोजीशन में देखा होगा, उसको फ्रेम करा के वो लटकाते हैं ताकि कस्टमर कंज्यूमर उसके विजन और मिशन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सके. सो प्लीज़ बी so much conscious about it कि these things should be written and these things should be mentioned when you are going to design or decide your strategic planning process. Okay ji, now moving towards the elements of the mission statement, that what elements should be. Elements means the part of the basic mission statement, how we can design our mission statement. So these are the 5 basic questions that you ask for yourself or for your business as a CEO or owner or a entrepreneur. That 5 basic questions to be answered in mission statement. Who are we? What are the capabilities? Who are we means what are the capabilities, what are the resources, what are the internal strengths of your company that we are going to play with, what are the tools and techniques we use to implement, who are our customers, आप किसके लिए अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को इनिशिएट करने जा रहे हैं, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपके लोग कौन से हैं, उनका जेंडर क्या है, उनकी एज ब्रैकेट क्या है, what are the need and demands and wants of your target customers. These things should be decided in mission statement. And the third most valid point is what is our operating philosophy. ये बहुत सारी organizations नहीं करती जो कि स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस हैं, लेकिन ऑपरेशनल फ़िलासफ़ी आपकी डिक्लेयर करती है, बताती है इंफॉर्मेशन दैट हाउ यू डील विद योर कस्टमर्स एम्प्लॉयज़. अगर यहाँ पे एक भी एम्प्लॉय के बारे में कोई बात कर दी जाए, फॉर एग्जांपल इफ़ द फिलॉसफी ऑफ योर कंपनी इज़ दैट nobody can talk about or backbiting about your employees, it means every person should be careful in your organization that these bad habits should be neglected. So operating philosophy should be declared. आपकी mission statement में ये होना चाहिए कि how your companies will how your SBUs और companies will operate. कौन आपके टारगेट कस्टमर इतने अच्छे होंगे जिनको वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप देंगे या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देंगे. And the fourth answer question may be the what are our core competencies or competitive advantages. We studied in the last lecture about competitive advantage, and I suggest you to grab some or download some articles regarding competitive advantage. So this is the core area or a core concept of success of any company. If your core competencies or core competencies, now what the competencies is, let me elaborate this first, then you can understand the word core competencies. Overall competencies are basically the strength of your company. Competency वो कहते हैं ये बंदा बड़ा competent है, it means कि something unique in that person or in sense of capabilities, in sense of hard work, smart work. This person is much more competent than other class fellows or other class members or other in the community. So competency means there is some unique part, strength that exists in those companies or in those brands. Now what is the core competency? Core competency is basically the one element or two element that make that company so much important for the customer or unique for the customer, कि कस्टमर घर से सोच के निकलता है कि इसका ये competitive advantage है. और core competencies leads to competitive advantage. इसमें तो word और दरमियान में लिख दिया ना, what are our core competencies or competitive advantages. But make one thing clear
कि कोर कॉम्पिटेंसी लीड करती है कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कोई भी कंपनी की नहीं है, देन इट्स 90% चांसेस दैट देयर इज़ नो कंपेटिटिव एडवांटेज एज वेल। सो कोर कॉम्पिटेंसी एक ऐसी वाहिद चीज़ होगी, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी मशीनरी हो सकती है, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपका एचआर हो सकता है, आपके ऑपरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, दैट कोर कॉम्पिटेंसी लीड्स टू द कंपेटिटिव एडवांटेज। जो भी वेबसाइट्स लोडिंग में ज़्यादा टाइम लेती हैं, आप उनको जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज द एक्टिविटी परफॉर्म ऑन दोज वेबसाइट इज़ सो मच हैवी दैट यू आर अनएबल टू मेक सम रिक्वेस्ट फॉर दोज वेबसाइट्स, क्योंकि उनके अंदर वो जो ऑपरेशनल कोर कॉम्पिटेंसी वो नहीं होती, और इसका वजह से वो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खो बैठती हैं और आप उसको यूज़ नहीं करते। But if any brand has the core competency of making it much more suitable, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सो कोर कॉम्पिटेंसी किसी भी हालत में हो सकती है। जिलेट की एग्जांपल आई हैव द केस स्टडी फॉर द जिलेट डेवलप सच इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स that competitors yet to think to decide what product should be made, and Gillette is the company who made those products before their competitors, and they sell it out in the market and grab maximum market share। और अभी भी अगर आप देखें तो जिलेट एक वाहिद कंपनी है पाकिस्तान में भी जो कि अपने इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स की वजह से इतनी ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब किए हुए है कि कोई भी उसका कंपैटिटर एग्जिस्ट नहीं करता। द कोर कॉम्पिटेंसी इज़ इनोवेशन। अभी कंपैटिटर उसके सोच रहे होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाएं, और वो अपने प्रोडक्ट को बनाकर बेच कर भी अपने प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके जा चुका होता है। तो यही उसका कंपैटिटिव एडवांटेज है कि वो यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन करता है और उसको बनाता है। ओके जी, द फिफ्थ बेसिक पॉइंट फॉर डिज़ाइनिंग द मिशन स्टेटमेंट और द एलिमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट जो आपकी मिशन स्टेटमेंट में होना चाहिए। व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू बीइंग अ गुड स्टीवर्ड ऑफ आवर ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। आपकी एज ए ऑनर, एज ए सुपरवाइज़र, स्टीवर्ड मीन्स हु टेक केयर ऑफ इट, यानी कि जो ख्याल रखता है आवर ह्यूमन, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का, विद आपकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इसका अगर हम डायरेक्ट मीनिंग लें, सो इट्स टोटली द द सोशल वर्क टुवर्ड्स द ह्यूमन, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी कंपनी कौन सा ऐसा काम करती है जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो, the best for society। Okay, selling is good, profitability generating is very good, but what extra thing that provide towards the society should be included in your mission statement? So these are the basic questions that you need to ask from your mission statement or designing a mission statement, that these questions should be answered in your mission statement. Then customer should know, or your employees should know, or your whole stakeholders will know that what you are going to play with. So you need to know your grounds, and you need to know what your players are and how you direct those players that you can win the game in the market. Okay people, we have some examples here, like if we take an example of Boeing developed their mission statement in 1995 to be the number one aerospace company in the world and among the premier industrial concerns in terms of quality, profitability and growth। वो कहता है जी हम नंबर वन एरोस्पेस कंपनी इन द वर्ल्ड गिने जाएंगे, और अमंग गिने जा रहे हैं, एंड अमंग द प्रीमियर इंडस्ट्रियल कंसर्न्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और हमारी क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट के ऊपर इंडस्ट्री वाइज प्रीमियम है। इन्होंने फिर 2000 आफ्टर 5 years रिवाइज की अपनी मिशन स्टेटमेंट, एंड दे डेवलप्ड आवर मिशन इज़ बिगर एंड ब्रॉडर। उनको याद आया कि ये तो सिर्फ एरोस्पेस कंपनी और क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, तीन चीज़ों पे बात हो रही है, बट इट्स नॉट, जो हमने भी पॉइंट्स एलिमेंट्स पीछे पढ़े हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही हैं। आवर मिशन इज़ बिगर एंड ब्रॉडर देन एवर। दे डिज़ाइन द मिशन स्टेटमेंट 2000। इट इज़ टू पुश नॉट जस्ट द इन्वेलप ऑफ फ्लाइट, हम सिर्फ फ्लाइट नहीं देते, बट द इंटायर इन्वेलप ऑफ वैल्यू रिलेटिंग टू आवर कस्टमर एंड शेयर होल्डर। अब अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करें तो इसमें क्वालिटी, इसमें पीपल और शेयर होल्डर, कस्टमर का कहीं जिक्र नहीं है। वो अपने बारे में ही जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं कि ये एरोस्पेस कंपनी है और हम उसको कंसर्न पे क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पे लेके जा रहे हैं, यानी कि ये कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपनी वर्किंग है और अपने ऊपर ही इसकी तमाम वर्किंग की वो विजन स्टेटमेंट बनाई हुई है। देन दे रिवाइज्ड, और उनको याद आया या उनको किसी सियाने ने कहा कि आवर मिशन इज़ मस्ट बी ब्रॉडर,
क्योंकि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, अगर आप पिछली स्लाइड अभी हम ऑब्जर्व कर रहे थे जिसमें हमने ये देखा कि हु आर आवर कस्टमर्स, हमने उनके लिए क्या किया, हमारी ऑपरेटिंग फिलॉसफी क्या है, हमारी कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, इसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था. Our mission is bigger and broader than ever. It is to push not just the envelope of light but the entire envelope of value relating to our customers and shareholders. अब वो ये बता रहे हैं कि जी हमने वैल्यू के बारे में बताया कि हमारी कंपनी वैल्यू डिलीवर करती है रिलेटिंग टू आवर कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स, और हम ब्रॉडर जा रहे हैं. वो योर मिशन इज़ बिगर ब्रॉडर. देन दे रिवाइज्ड अगेन 2006, people working together as a global enterprise for aerospace leadership. अगर आप इन तीनों मिशन स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करें तो कितना बड़ा चेंज है. इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ कंपनी, वेयर एज दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन द कस्टमर शेयर होल्डर्स. एंड नाउ पीपल वर्किंग टुगेदर, अब इसमें सारे लोग, कस्टमर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज़, वो खुद कंपनी वर्किंग टुगेदर जॉइंटली वर्क कर रही है एज ए ग्लोबल एंटरप्राइज, एज ए ग्लोबल बिजनेस, एज ए ग्लोबल स्ट्रक्चर. किसके लिए? फॉर एरोस्पेस लीडरशिप, यानी कि एरोस्पेस लीडरशिप गेन करने के लिए ओवरऑल. सो अगर आप को फील करें इस तीनों स्टेटमेंट का, तो मिशन स्टेटमेंट की जो बेस्ट एलेबोरेशन है वो ये 2006 वाली अभी तक इन्होंने रिवाइज़ की हुई है. सो इट मे चेंजेस, आपको वक्त के हिसाब से आपको अपनी टारगेट मार्केट की, अपनी कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग समझ आती है, एंड यू विल रिवाइज दोज मिशन स्टेटमेंट्स टू make much clear picture of your business, that which business in which you are currently working in. So this is the Leo Bernard, इसकी एग्जांपल दी गई है. Celestial Seasonings है, Intel Corporation. ओके, we talk about the Intel Corporation. इस कंपनी के बारे में आप मोस्टली बहुत सारा जानते होंगे, जो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स यूज़ करते हैं या जो लैपटॉप और PCs के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं. 1995 इंटेल कॉर्पोरेशन डिज़ाइन द मिशन स्टेटमेंट दैट डू ए ग्रेट जॉब फॉर आवर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड स्टेक होल्डर्स by being the preeminent building block supplier to the computing industry. 2000 में ये रिवाइज होती है जी. इंटेल्स मिशन इज़ टू बी द preeminent building block supplier to the world wide internet economy. और 2006 में अगेन दे रिवाइज देयर मिशन स्टेटमेंट. इंटेल्स कॉर्पोरेट मिशन इज़ टू डू ए ग्रेट जॉब फॉर आवर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड स्टॉक होल्डर्स बाय बीइंग द परमानेंट बिल्डिंग ब्लॉक सप्लायर टू द वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इकॉनमी. ठीक है जी. अब आप इसका अगर तीनों का कंपैरिजन करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट सो मच क्लियर दैट you are just grabbing your customers from the neck, or you are elaborating or saying to your employees or your stakeholders that we are dealing with you preeminently building block है हम सप्लायर का वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इकॉनमी की वजह से. तो हमारा ये कॉर्पोरेट मिशन जो है वो डिज़ाइन किया गया है. इनको इन्होंने पैरेंथीसिस में या इन्वर्टेड कॉमर्स में किया है टू मेक इट मच मोर हाईलाइटेड कि हम किस वर्किंग के ऊपर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इकॉनमी को वी डू ए ग्रेट जॉब फॉर आवर कस्टमर्स. हम अपने इंटेल्स मिशन को उन्होंने कॉर्पोरेट मिशन का नाम दे दिया, यानी कि कॉर्पोरेशन जो है वो पूरी ओवरऑल जो है वो वर्क कैसे करती है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट. यू बेटर अंडरस्टैंड वो विच हेल्दी मिशन स्टेटमेंट विल address your company's working, in which business you are currently working in. So this is the criteria for designing the mission statement. I hope you understand the basics, that how we can revise or how we can elaborate or communicate our mission statement. So please observe these examples and you better understand to design your marketing strategy, marketing plan. But this is the later portion. First you need to understand the mission statement. Okay, these are the mission width and stability. From this slide to this slide, we move towards the mission width and stability. So width is basically the scatteredness of your mission statement. If it is too broad, it's unable to understand, and it will meaningless for your customer, consumers, and it will be meaningless for your employees as well. Your philosophy is also diminished if your width of your mission statement will be broader, and it should not be too narrow as well. It means the clarification or clear picture of your business should be identified or declared or communicated in mission statement. And if we talk about the stability, the frequency of modifications, because the mission statement is the one thing that is the cornerstone. The cornerstone is the one stone that the whole building is based on that cornerstone. So cornerstone is one mission statement is one of the cornerstone of your marketing plan.
So it should be stable, it should not be changed, it should not be modified, or very little amendment should be done. If we take an example of Intel Corporation, you can observe that there is a minor change in these three eras: 1995, 2000, 2000. They use the similar words, but some position changing of their mission statement. They change some positions of like inverted comma whatsoever. So stability frequency of modification should be lower. Stable mission statement should be communicated, because if we take an mission statement like make all people happy around the world by providing them with entertaining products, अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मिशन स्टेटमेंट अगर ऐसी हो कि मेक ऑल पीपल हैप्पी अराउंड द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग देम विद एंटरटेनिंग प्रोडक्ट्स, अब ये किस कंपनी की हो सकती है? फॉर एग्जांपल ये डिज्नीलैंड की हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये वॉल्स की हो सकती है, फॉर एग्जांपल किसी भी एंटरटेनिंग प्रोडक्ट की, मूवीज़ की हो सकती है, सोनी पिक्चर्स की हो सकती है. सो ये ब्रॉडर है, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और जस्टिफाइड कि ये सारे लोगों को एंटरटेनिंग कौन सी प्रोडक्ट से जो है वो हैप्पी कर सकता है. सो इट शुड नॉट बी वाइड, इट शुड नॉट बी मॉडिफाइड क्विकली और इमीडिएटली. अगर हम मैकडोनल्ड की एग्जांपल लें, तो मैकडोनल्ड की जो कॉर्पोरेट मिशन स्ट्रेटजी मिशन स्टेटमेंट है, दैट इज़ to be our customers favorite place and way to eat and drink. This mission statement highlights the significance of customers as the business focus while maintaining the company as a major influence on their food and beverage purchase decisions. The whole focus is the food and beverage purchase decision. McDonald's corporate mission statement has the components like number one component of the mission statement that I elaborated. अगर हम इसकी मिशन स्टेटमेंट मैकडोनल्ड की बात करें तो टू बी आवर कस्टमर्स फेवरेट प्लेस एंड वे टू ईट एंड ड्रिंक, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं. नंबर वन इज़ द कस्टमर्स फेवरेट प्लेस टू ईट एंड ड्रिंक. इट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग सच ambience or provide such layout in our restaurants that you feel comfortable to eat here, you comfortable to drink here. And secondly, the second portion of the mission statement is customers favorite way to eat and drink. This is the destination where customer can go eat and drink and get hygienic products. So they provide the ambience, they provide the best environment for eating and drinking, as well as the products. They declare themselves as the destination of favorite eating place or favorite drinking place. So mission statement, I know that it's much more critical to understand how we can write this, but I try my level best to elaborate you people that how we can design the mission statement, क्योंकि ये एक वाहिद की फैक्टर है जो आपके बिजनेस को आगे मूव करेगा. So these are some examples we discussed, like customer focus mission statement की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे examples हैं that in we talk about. Okay, make one thing sure that mission statement is plays such important role. क्या आप अपने रेलवे का हाल देख लें, that if we talk about the aeroplane और air industry और aerospace, अगर हम एयरलाइंस की बात कर लें तो एयरलाइंस इतनी ज़्यादा फेमस है. एमिरेट्स की अगर आप एक दफ़ा एग्जांपल अगर आप एक नेम सोचें तो एमिरेट्स इज़ सच अ जाइंट in which a luxury you can avail in their sittings और एरोप्लेन्स और फूड और बेवरेज whatsoever. लेकिन अभी तक रेलवे में इतना कोई स्ट्रॉन्ग मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट नहीं बना पाया, क्योंकि उनको बिज़नेस का नहीं पता कि वी हाउ वी कैन अवेल दिस, हम इस बिज़नेस में क्यों हैं, मतलब वाई रेलवे इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. सो मिशन स्टेटमेंट आपको बताती है डायरेक्शन कि किस तरह से आप अपने ब्रांड को और अपनी प्रोडक्ट को और अपनी बिज़नेस को जान सकते हैं, नो कर सकते हैं. सो ये एक एग्जांपल है कस्टमर फोकस मिशन स्टेटमेंट की, जो मैं आपको थोड़ा सा इसका एलेबोरेट कर देता हूँ. यू विल देन अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो आफ्टर रीडिंग योर बुक मटेरियल एज वेल. सो कस्टमर मिशन स्टेटमेंट इज़ बेसिकली बेन एंड जेरी आइसक्रीम की एग्जांपल इसमें दी गई है. Ben and Jerry ice cream consists of three interrelated parts. The good example to understand the organization working that have positive impact to customers and society. इन्होंने तीनों चीज़ों को जोड़ा जो हमने बात की थी कि सोसाइटी को, प्रोडक्ट को और इकोनॉमिक को. तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट मिशन दे सेड दैट टू मेक डिस्ट्रीब्यूट, दे टॉक अबाउट देयर आइसक्रीम, यानी बेन एंड जेरी एक आइसक्रीम ब्रांड है. उन्होंने अपनी जो मिशन स्टेटमेंट बनाई है वो 3 हिस्सों में डिवाइड की है. मैं पहला हिस्सा पढ़ने लगा हूँ, दैट इज़ द प्रोडक्ट मिशन. प्रोडक्ट मिशन इज़ उनका ये है जी कि टू मेक डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑल नेचुरल आइसक्रीम
with a continued commitment to incorporating wholesome, natural ingredients and promoting business practices that respect the earth and the environment. हम ऐसी प्रोडक्ट और आइसक्रीम बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तीन वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं, टू मेक, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल, बनाना, उसको तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड दे सेल इट, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल नेचुरल आइसक्रीम, जिसके इंग्रेडिएंट्स और उनकी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा अपनी आइसक्रीम के साथ उन्होंने कहा हमारी स्ट्रॉन्ग है कि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को बनाते हैं और अपने बिज़नेस को इस तरह प्रमोट करते हैं ताकि वो अर्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी सूटेबल हो, यानी कि उनकी प्रोडक्ट के फ्रॉम कैप टू स्टिक इज़ सो मच रिसाइकलेबल दैट देयर प्रोडक्ट इज़ नेचुरल, और वो इतनी हाइजेनिक है कि आप इनकी स्टेटमेंट से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. The second part of their mission statement is the social mission, to operate the company in a way that actively recognizes the central role that business plays in society by initiating innovative ways to improve the quality of life locally, nationally एंड इंटरनेशनली. वो कहते हैं जी हम अपने कंपनी को, टू ऑपरेट द कंपनी इन ए वे, हम इस तरह ऑपरेट करते हैं दैट एक्टिवली रिकग्नाइजेज द सेंट्रल रोल दैट बिजनेस प्लेज इन सोसाइटी, कि हम अपने आप को एक सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी समझते हैं. किस तरह? बाय इनिशिएटिंग इनोवेटिव वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. हम इस तरह के इनोवेटिव वेज इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आते हैं जो कि लाइफ को लोकली, यानी कि करंट जहाँ पे उनका स्टोर है या जहाँ पे उनका बिजनेस है, नेशनली और जिस एरिया में या जिस कंट्री में वो कर रहे हैं, और इंटरनेशनली भी हम इसको सोशल मिशन को लेकर चलते हैं. अब आपने अगर इसके दो लेवल जो मैंने आपको अभी वर्बली बताए हैं, इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहले उन्होंने प्रोडक्ट की बात की है, प्रोडक्ट की यानी कि वो जो अपने कस्टमर को जिसके ऊपर कन्विंस करके उसको सेल आउट करेंगे, और फिर उन्होंने सोसाइटी की बात की है, यानी कि हमारी प्रोडक्ट आपके लिए तो हाइजेनिक है और सोसाइटी के लिए भी हम आपको इस तरह की इनोवेटिव वेज लेके आ रहे हैं जिसमें हमारी जो पर्सनल प्रोडक्ट है विल नॉट बी सो मच हर्ट टू अ सोसाइटी. और इकोनॉमिक मिशन की बात करें तो वो कहते हैं टू ऑपरेट द कंपनी ऑन ए सूटेबल, सस्टेनेबल, फाइनेंशियल बेसिस ऑफ profitable growth, increasing value for our stakeholders and expanding opportunities for development and career growth for our employees. अब उन्होंने तीसरा जो लेवल अचीव बताया इकोनॉमिक मिशन का, वो कहता है अपनी कंपनी को हम इस तरह ऑपरेट करते हैं कि वो सस्टेनेबल फाइनेंशियल बेसिस पे प्रॉफिट लेती रहे, ग्रो करती रहे, इंक्रीजिंग वैल्यू फॉर आवर स्टेक होल्डर, और हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, या वेयर हाउस डीलर्स हैं, उनके लिए हम एक्सपैंड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर देयर कैरियर ग्रोथ फॉर आवर एम्प्लॉयज़ एज वेल, और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी हम कैरियर ग्रोथ की तरफ मूव करते हैं. यानी कि अगर आप इसका देखें इस बैरन जेरी के पार्ट मिशन स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स को, कि वो अपनी प्रोडक्ट से लेकर अपने ईच एंड एवरी बड़ी पर्सन जो उनके साथ इन कॉन्टैक्ट है उसके लिए उन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है कि हाउ दे कैन मूव और इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल और देयर, और ये टाइलनल और अमेरिकन क्रॉस 2 कंपनीज़ हैं जिसकी एग्जांपल इसमें दी हुई है आपकी बुक में. ये मैं आपको बुक का एक पार्ट पोर्शन भी जो आपके चैप्टर का है ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, इसको आप स्टडी कर लेंगे. ये आपको सारा जो स्ट्रक्चर बताने का मकसद था कि मिशन स्टेटमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है आपके बिज़नेस के मार्केटिंग प्लान को बनाते हुए कि अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि व्हाट योर एक्चुअल मिशन स्टेटमेंट इन विच बिजनेस यू आर करंटली डीलिंग इन, देन यू आर अनएबल टू डिसाइड which destination you want to go, or which mission or which objective you want to avail, or which profitability process is much more suitable for your business that you can grab from the market and you avail those opportunities by utilizing your best strength of your company. ये तमाम चीज़ें आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आपकी मिशन स्टेटमेंट डिज़ाइन नहीं है. सो मेक दैट थिंग क्लियर कि आपको ये अंडरस्टैंड टॉपिक हो गया हो.